Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. As we have already covered most of the C language topics earlier, this video is a continuation of the same. In this video, you will learn to work with arrays, where specifically we learn to declare, initialize and access elements of an array with the help of examples. Okay. Now, what is the agenda of this video? In this video, you will see what are the user defined data types. In that particular, what are the arrays? In arrays, what are the particular single dimensional arrays in detail? And a quick introduction about the multi-dimensional arrays, which we are going to cover as a part of next session. Okay. Now, what are the user-defined data types? We have already covered what are the data types and the types of the different types of data types. If you want to know in detail, go back to my videos and then you'll find one video on particularly data types. Okay. Now, data user-defined data types are the data types which are created by users or generated by users. Those are categorized into 5 different types like arrays, structures, unions, enums, and pointers. And in this video, we will look at the array. So why array is important? As we know, primary data types, integer, character, float, are only capable of storing one value at a time. Therefore, you would not be able to have a data type that contains more than one slot to store more than one variable. This is where array comes in a picture. So arrays are simple data types that can store more than one variable. Each variable is stored in an array is called as an element. Okay. So what are arrays? An array is a collection of variables of the same time that are referred to the common name. A specific element in an array is accessed by an index. In C, all arrays consist of continuous memory location. The lowest address corresponds to the first element, whereas the highest address corresponds to the last element. Arrays can have more than one dimensions. Maybe it can be one or two, three, four, 5 dimension arrays. Okay. In railway reservation systems, airlines, they use like a multi-dimensional arrays. Okay. That's one of the applications of the matrices we have. The most common array is a string, which is simply an array of characters terminated by null. So guys, don't worry if you do not understand the lines which I just talked about. As we go through this video, you should be able to relate everything what I just mentioned. Okay. Now let's look at the types of the arrays. So there are 2 types of arrays. Arrays are broadly categorized into single dimensional array and multi-dimensional array. Single dimensional array means only one row and multiple columns. Remember. And whereas multi-dimensional arrays is basically a multiple rows and multiple columns. Okay. Now we will look at the multi-dimensional array afterwards, but right now we will basically look at the single dimension array. So how the single dimensional array declaration looks like? So single dimensional array declaration looks like this. You need to give a data type, variable name, and the size. Okay. Now what exactly that means? So this data type means it says the base of the array, which is like type of each element this array is going to store. So in this case, you see mark are of type integer. So in a memory, marks will have in a memory there will be a place to store 10 integers continuously in the memory location, and that memory location is given name as what? Marks. Okay. So you basically need to give a data type. आपको कौन से टाइप के वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर रखने हैं, एरे के अंदर रखने हैं, और उस एरे का साइज कितना होगा. That's what basically you need to give. So data type declares the base type of the array, which is the type of the element in the array. Var name is the name of the array, that is the name of the variable or the name of the memory location. Size defines how many elements the array is going to hold. Size is also called as what? Dimension. So this is what we call it as a dimension. Okay. So when we say int marks 10, this will basically allocate a memory for 10 integers
that is 40 bytes, one integer 4 bytes, so 10 integer 40 bytes in a continuous manner. Okay, now let's go to the IDE and see how the practical examples work on the. Yes, this is the IDE dev plus plus I'm using. Okay, now we have already seen this is the declaration, right? Data type, variable name, and the size we need to give. This is called as a dimension. Okay, now this is a one dimension array with the 10 size. Okay, now what about the double dimension array? You know the matrices. If you have studied the maths, you would know the matrices. In a matrices, there are rows, there are columns. So for rows, you will need one dimension, and for rows, you will need one dimension. That's why it says this matrix is of 3 by 4 matrix. So this will hold 12 elements. How many elements? 12 elements. This will hold 10 elements only. If you write a cube, if you write a cube, something, right? Cubic stuff, right? Of 2, 3, and let's say 5, right? Now, cubic cubic is an array, three-dimensional array, 1, 2, 3, three-dimensional array of size 2 cross 3 cross 5. And how many elements this will hold? This will hold 30 elements. Why? 5 threes are 15, 15 twos are 30. This is just to give you an idea, right? What exactly the multi-dimensional arrays are. Okay. Now let's look at how to declare and initialize the arrays. Okay. Now to declare and initialize array, there are two different ways. You can simply initialize. Initialize means whenever you declare at the time only you allocate the values, or maybe you put the values there, right? So in this case, when you say int marks 5, okay, what exactly, and when you say 2, 4, 5, 17, 14, what exactly it will do? This will initialize this marks array with these values. So marक्स जो array राइट उसके अंदर ये पूरा वैल्यू चला जाएगा. उसका मतलब it marks will basically have 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 17, and 34. Okay, now this is the 0th element, this is first element, second element, third element, and fourth element, but in total there are 5. Okay, why? Because the index always starts with what? 0. सो जो एरे का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है. एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट नहीं होता है. अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स भी दिख रहे होंगे, दिस विल नॉट बेसिकली बी 5. So to access 2, you will need to say 0th element. This will be first element. This is second, third, and fourth. So remember, this is how these are numbered. जिस तरह से अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो और आप रो हाउसेस की सोसाइटी है तो उसको नंबर्स होते हैं, राइट? सिमिलरली एरेज में भी एक्चुअली नंबर्स होते हैं. So to access number 2, you need to give a 0th element of marks. Correct. So what if you, and then one more thing, this is a dimension which is very much important. Size of the array is very much important. Always good practice to put the size. Okay, but if you initialize array, if you initialize the array, at that time it's okay if you do not give this size. This is optional. अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ का जो साइज है वो ऑप्शनल है. लेकिन अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो वहां पे आपको साइज देना ही है. दिस इज नॉट वैलिड. नीड अ साइज. नीड अ साइज इफ नॉट इनिशियलाइज. अगर इनिशियलाइज किया है देन size is what? Optional. Remember, so size is optional. This is valid, this is not valid. This is how you can declare and initialize the arrays. Okay, now let's see. You have declared the array, you have initialized the array. How you can access the elements of array? Array के अंदर के elements आप कैसे access करोगे? See, तो यहाँ पे marks करके एक array है जिसमें 5 integers हैं. 5 integers कौन से है? 2, 4, 5, 17, 34. करेक्ट. तो अगर तो आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे 2 को रेफर करना है तो आप कैसे रेफर करोगे? मार्क्स सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको. द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट. 0 marks 1, that means what? 4. marks 2 means 5. marks 4 means 34. चलो देखते फिर. We will try to print it.
So we'll try to print first element, marks 0, second, third, fourth, and fifth, right? Let's say. So when we run it will basically give us the, see, you got first element, second element, third element, fourth element, fifth element. So इस तरह से आपको उसको एक्सेस करना है. अगर आपको 17th एक्सेस करना है, so you will say marks of 0, 1, 2, 3, marks of 3. So marks of 3 will give you 17. Remember, that's how. So you can access the elements of array using the subscript, but the index will be what? Always n minus 1. If you want to access the fifth element, it will be index 4. Sixth element, index 5. Remember. Now let's just try to display the elements in an array, which you can just do it simply using printf and for loop. See, now what I'm just doing it here, marks I, I'm using the same array, and I'm having an integer variable I, which is basically going to be iterator over this. So I is equal to 0, I less than 5, I plus plus. I'm just trying to print the value, printf and marks I. So it will just print all this stuff. What I'm just doing, right, instead of doing 5 printfs here, I'm trying to use the loop and trying to make a code optimized and a smarter code. Okay, so it's basically gonna give this way. See, it just printed the output. So using a printf and for loop, you can simply print any array. Okay, now what is the memory location of the array? As I said, मैंने पहले ही बोला था कि memory location जो होता है में array का वो continuous होता है. इसका अगर लोकेशन लेट से 4000 है तो इसका 4004 होगा, इसका 4008 होगा, इसका 4012, इसका 4016. Why? Because memory locations of these all these values is going to be what? Contiguous, right? See, so और हमको अगर address print करना है, so we use address of operator, right? So address of marks I, जब I 0 रहेगा तो 2 का एड्रेस प्रिंट करेगा, 4 का एड्रेस प्रिंट करेगा नेक्स्ट इटरेशन में, लाइक दैट. लेट्स सी व्हाट आर द एड्रेसेस देन वी हैव. सी, I का एड्रेस है 6684 160, 6684 164. हर में 4 4 का डिफरेंस है. व्हाई? बिकॉज इंटीजर साइज इज 4 बाइट्स, दैट्स व्हाई. एंड दीज आर कंटिन्यूअस. सी 160 164, अगला ये 2 का, ये 5 का है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज वेयर 5 is stored, this is where 17 is stored, this is where 34 is stored, is it? So this is what the way memory is allocated for the array elements in a continuous fashion. Now let's maybe try to update the value, how to update or insert the values. Now somehow let's take an use case कि एक एग्जाम हुई है, एक 20 मार्क्स का एग्जाम था. ओके, सभी स्टूडेंट्स का, और 20 मार्क्स का एग्जाम में 6 स्टूडेंट्स अपियर हुए, and all those 6 students got some marks. किसी को 2 मार्क मिला, 4 मिला, 5 मिला, 17 मिला, 34 19. somehow क्लास टीचर ने क्या मिस्टेक कर दिया, फिर टीचर से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया कि दिस शुड हैव बीन 14 आउट ऑफ 20, राइट? आउट ऑफ 20 34 तो हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे 14 की जगह पे 34 हो गया. सो इसको हमको करेक्ट करना है. हाउ वुड यू करेक्ट, राइट? लेट्स सी. नाउ दिस इज जस्ट प्रिंटिंग द एरे बिफोर मेकिंग एनी चेंज. यहाँ पे देखो मैं अपडेट करो. व्हाट आई एम सेइंग, मार्क्स के अंदर जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है उसको 14 कर दो. सो मार्क्स के अंदर फोर्थ वाला वैल्यू, सो 0 1 2 3 4, ए जो वैल्यू है इसको 14 कर दो. तो खाली ए वाला 34 निकल जाएगा, 34 की जगह पे 14 हो जाएगा. नया एरे विल बी व्हाट? 3 4 5 17 14 एंड 19. फिर जब मैं प्रिंट करूंगा सेम यही, जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे फॉर लूप, राइट, इट विल बेसिकली गिव मी the new updated values. See, array before change says 2 4 5 17 34 19, whereas after change it says 2 4 5 17 14 and 19. ये वाला जो एलिमेंट हम लोगों ने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था. सो इस तरह से आप एरे के कोई भी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट्स आउट ऑफ बाउंड. अगर आपका जो एरे का साइज है, एरे का साइज इज ओनली 5 लेट्स से, लेकिन आप इस एरे के साइज के बाहर का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, व्हाट इट विल गिव.
let's say if you want to, you know, right, the index starts from 0, and now if you just try to access the marks minus 1 index पे क्या है, and mark 6 मतलब क्या, 7th element. So 7th element यहाँ पे है ही नहीं, वो क्या करेगा, will that give error or what it is? See, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक ये किया था कि I should have given here 6, because when I say marks 5, right, it is expecting only 5 elements, whereas I have given a 6. So now see, it printed something, -1 पे क्या आया, 0, और element at 6 is what, 16. कहाँ है 16, लेकिन नहीं है. So remember, that's one of the disadvantages we have with the arrays. Arrays के साथ अगर आप out of bound के values निकालना चाहोगे तो वो error किसी किसी compilers में error देगा, किसी किसी compilers में errors नहीं देगा. So always make sure that you are not accessing the elements out of the bound. आप इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, इंडेक्स 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और जिसका मैक्सिमम साइज है मैक्सिमम साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट. दैट विल बेसिकली गिव यू malicious output. Okay, now let's look at some examples for this array पे. We'll see now some examples. The first example says accept 5 numbers from user. अभी यूजर से हमको 5 नंबर्स लेने हैं, उनको प्रिंट करना है. इट्स वेरी इजी. आई थिंक लेट्स डू दैट नाउ. See, to save some time, I have already coded the stuff. Okay, so this int I is the iterator for marks array. Right now let's try to accept the input from user. Now user से अगर हमको input लेना है तो हम user को एक अच्छा सा message देंगे. The message is like enter the marks of 5 students. Now for I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, this is how we accept the elements in a loop, right? Scanf. Why scanf? Because we want users to enter the values. So user will enter integer, that's the %d, and this ampersand means what, whatever number is entered that will go in the address of marks I. So पहले I 0 होगा तो पहला जो नंबर जाएगा वो marks 0 के एड्रेस पे जाएगा, फिर I 1 होगा तो marks 1 के एड्रेस में जाएगा, so on. तो इस तरीके से हम लोग 5 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट ले रहे हैं. Now let's just try to print it, right? The same thing, instead of scanf I'm just using a printf, so that it will just print the values. Correct. Now let's see. So when you execute it, right, it will ask for the 5 elements, right? 32, 56, 78, 34, 90. See, the data what we have entered is this: 32, 56, 78, 34, 90. अब ये tabs करके क्यों आ रहा है? Because I've just formatted it. Okay, so it's not a big deal. So इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो और array में स्टोर कर सकते हो और उसको प्रिंट भी कर सकते हो. Let's take another example of initialize the array with the certain integers and write the program to find the largest number. अभी जो भी यूजर इंटर करेगा नंबर्स वो स्टोर करने हैं एरे में, लेकिन वो जो भी नंबर यूजर इंटर किए उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है. अभी लार्जेस्ट नंबर कैसे बताएंगे, राइट? नाउ लेट्स डू वन थिंग. इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग द 5 नंबर्स, राइट, लेट्स हैव 8 नंबर्स. तो अगर वहां पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा. So this will also be 8, right? Now, what exactly this example is, I'll first, let me just run it, right? So that you know what exactly it is, right? So into the student marks of 5 students. See, we just forgot to change the printf statement, right? Now 8 students we are asking for. So when it's enter 8 students marks, 32, 78, 56, 99, 4 numbers are done. 55, 57, 6 numbers are done. Someone is failed. 34, 43. So see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So इसमें से हमको largest number निकालना, big number, which is one, that is 99. See, it says largest number is what, 99. Now what is the logic I have coded? See, सबसे पहले तो मैंने I ले लिया जो iterate करूंगा मैं. अगर आपके पास array है उस पर iterate करने के लिए iterator लगता है, that is I. मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो वो मुझे कहीं भी स्टोर भी करना पड़ेगा. सो आई गॉट दैट वेरिएबल एज वेल लार्जेस्ट. और जो एरे है दैट एरे आई विल स्टोर समवेयर, सो आई एम डिक्लेयरिंग द एरे. नाउ आई एम एक्सेप्टिंग 8 एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर. सो इंटर द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट. एक उसको मैसेज दे दिया कि भाई तुमको इंटर करने हैं. देन यूजिंग स्कैन ऐप 8 एलिमेंट्स आई एम जस्ट मे बी
accepting from user and storing into the marks. Then see, आप अगर सिंपली मैथ्स देखोगे राइट, अगर आप सिंपली मैथ्स करते हो 2 34 56 राइट, लेट्स से 23 एंड 8, अभी इसमें से अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकला तो आप कैसे करोगे? आप पहले सबसे पहले नंबर पे जाओगे, आप बोलोगे चलो ए लार्जेस्ट है, व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल से दिस इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू व्हाट 2, फिर आप आगे जाओगे 34, अरे 34 जो हमने लिया है उससे भी लार्जेस्ट है, सो लार्जेस्ट आप चेंज कर दोगे। उसके आगे जाओगे आप 56, 56 तो 34 से भी लार्जेस्ट है, सो यू विल चेंज दैट। देन यू विल गो टू नेक्स्ट 23, 23 50 से लार्जेस्ट है नहीं है, सो आप ये इसको चेंज नहीं करोगे। आप 8 पे जाओगे, 8 इससे लार्जेस्ट नहीं, आप इसको चेंज नहीं करोगे। सो दैट्स हाउ द लॉजिक, राइट, हाउ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। सो लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू मार्क्स 0, जो पहला एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे उसको मैंने लार्जेस्ट बोल दिया। अभी मैं पूरा 8 एलिमेंट्स पे क्या कर रहा हूँ, इटरेट कर रहा हूँ। व्हेन आई इटरेट आई एम बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू चेक कि जो मेरे पास लार्जेस्ट है वो अभी मैं जिस वैल्यू पे हूँ उससे छोटा है क्या, मार्क्स आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, अगर है तो लार्जेस्ट इक्वल टू मार्क्स आई। अभी मैंने आप लोगों को जो लॉजिक एक्सप्लेन किया दैट्स व्हाट इट इज, एंड एट द एंड सो देखिए अभी क्या हो जाएगा। आप लेट्स से सबसे पहले ये अपनी एरे इंटर किया 2 23 56 43 एंड 3। सो सबसे पहले लार्जेस्ट में क्या रहेगा, सो लार्जेस्ट विल हैव 2, करेक्ट, लार्जेस्ट में आ जाएगा 2, एंड देन आई विल बी 0, सो लार्जेस्ट इज लेस देन मार्क्स आई, मार्क्स आई क्या है, मार्क्स 0 2, 2 is less than 2, no, so it will come out, I will become next, so 23 now, marks I में क्या आ गया 23, largest में क्या है 2, 2 is less than 23, yes, so अभी largest में क्या आ गया marks आए, so largest में मैंने 23 डाल दिया। सिमिलरली 53 56 होगा और आगे के दोनों स्किप हो जाएंगे। So that's how you can find out the largest number. Now how to find out the smallest number? बहुत easy है, सेम लॉजिक है, नथिंग, लार्जेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट है, राइट, टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, स्मॉलेस्ट को इनिशियली मार्क्स 0 से असाइन करो, खाली यहाँ पे क्या था, लेस देन था, यहाँ पे क्या जाएगा ग्रेटर देन आएगा, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट वन, राइट। नाउ वी आर ओनली कंसीडरिंग द 5 एलिमेंट्स नाउ, लेट्स से okay. So let's say 2 34 6 1 0, see, so the smallest number is what, 0, easy. So that's how you can find out the smallest numbers and the biggest numbers. Okay, now what is the next example? Let's take an example of initializing the array with some integers and find the number of occurrences of the particular array. So अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, see, आप जैसी array देते हो 2 23 45 या 45 56 23 4 2 23, अगर आपने ऐसा एरे दे दिया और आपको भी देखना है, चेक करना है कि 23 कितनी बार आया है, 23 हैज कम 3 टाइम्स, सो आउटपुट क्या आना चाहिए कि 23 इज 3 टाइम्स। 2 कितने टाइम आया हुआ है, 2 इज 2 टाइम्स, 23 1 3 टाइम्स, 45 1 टाइम, राइट, ऐसे। सो आप जो भी एलिमेंट बोलोगे वो एलिमेंट उस इस पूरे एरे में सर्च होगा और देखा जाएगा कि वो कितनी बार आया हुआ है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज द लॉजिक आई हैव कोडेड, करेक्ट। सी, सो वेरी फर्स्ट थिंग, इटरेटर ओवर द लूप, करेक्ट, जो मुझे नंबर फाइंड आउट करना है कि नहीं, जैसे मैंने बोला कि 23 फाइंड आउट करो कितनी बार है, तो दैट नंबर विल बी हियर, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आया है, राइट, व्हेन आई से 23 is 3 टाइम्स, so that number of times will be stored into the one of the variable, right, then actual array, ये जो पूरा array है ये array कहाँ पे स्टोर करना है, so this is the area, right, marks 10. Now accept all those 10 elements from the user, user will enter all those 10 elements and then using scanf it will basically be stored into the marks array. Then ask user to enter the number which you would like to see how many times, right, कौन सा number check करना है हमको, let's say 23 check करना है, 2 check करना है, 45 check करना है, so that number, right, so printf enter the element which you want to find the frequency of, so scan करके num में चला जाएगा। नाउ नंबर ऑफ टाइम्स, अभी हमको पता है कि कितनी बार आए हैं ये जो 23 नंबर अगर आपने बोला, राइट, 23 नंबर कितनी बार आया है,
उस एरे में वी डोंट नो इट, राइट? लेट्स सो एज्यूम देयर आर नो ऑकरेंसेस, कि अभी उसमें कुछ वो एक भी बार नहीं मिला है। अभी हम आगे जाके उसको पूरा का पूरा एरे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। वी विल बेसिकली गो थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे एंड सी whether that number is there. So सिंपल है, आप जीरो से चालू करो, i इज लेस देन 10। लेट्स से अगर आपने ऐसे यही एग्जांपल दिया, राइट? मे बी लेट मी जस्ट कीप दिस वन ओनली, करेक्ट? नाउ in this case what will happen if you want to find out 23? So number of times will be 0. Num is what? 23. When I is 0 it will come here. Is marks I is equal to num? Marks I क्या है? 2. 2 is equal to 23? No. So number of times increase नहीं होगा, बाहर आएगा, I आगे जाएगा 23. Is marks I is equal to 23? Yes. So a number जो है num at num times it will basically become what? 1. Then it will go next 45. 45 23 सेम है क्या? नहीं. Then next 56 23 सेम है? नहीं. 23 23 सेम है क्या? यस. सो ये क्या हो जाएगा? नम प्लस 1 प्लस प्लस, दैट इज एक से प्लस हो जाएगा. सेम 4 2 23 पे आने के बाद 3. दैट्स हाउ. नाउ हियर let's try to run it, and at them we are just printing this, right? So let's try to run it now. So it is asking for the marks of the 10 students. Let's say 23, 67, 34, 98, 23, 45, 67, 23, 45. How many elements are done? 3, 3, 6, 3, 9, and let's say 10. Correct. So which element we should look at the frequency of? Let's say 67. How many elements, how many students have got the mark 67? So you will say the number 67 is present in array 2 times. See, 1 and 2. Easy. So that's how it is. Okay. So working with the arrays is easy as long as you know, right, the logic behind it. Now let's look at the last example what we are going to see as a part of this exercise. You may be knowing the Fibonacci series. Okay, you may be knowing the Fibonacci series where I have made a mistake. So what is a Fibonacci series? Fibonacci series is a series की जहाँ पे जो टर्म होता है वो पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है. 1 1 are the common terms, but 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 5 plus 8 is 13, and so on. अभी हमको क्या करना है कि वी वांट टू स्टोर द 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. ऐसे सीक्वेंस के 20 टर्म्स हमको निकालने हैं एंड फाइंड द सम ऑफ दोस 20 टर्म. करेक्ट. तो लेट्स सी, आई इज द इटरेटर ओवर लूप. अभी हमको सम निकालना है, इसलिए हमने सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया. सो दैट विल स्टोर द एडिशन ऑफ ऑल द array elements, right? Rather, okay. Now we have got the sequence array of 20 size. हमको पता है पहले दो टर्म्स क्या है, 1 and 1 है. So we have initialized 1 and 1. We already know that the first two terms. Like then since हमको अभी एडिशन क्या करना है, अगर if you want to find out 2 you will need these two terms. So क्या इसे बोलते हैं लास्ट टर्म एंड इसे बोलते हैं सेकंड लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म को हमने 1 बना दिया एंड सेकंड लास्ट टर्म को हमने 1 बना दिया. Now let's try to iterate over the loop and create the sequence. अभी देखो I कितने से चालू होगा? 2 से. Why? The 0 and 1 are already filled. हमको 2 से आगे के एलिमेंट्स भरने हैं, इसलिए I चालू होगा 2 से and I will stop at 20 and every time I will increase by 1. Now let's see what exactly it is doing. So sequence I मतलब sequence 2. 2 में क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म. लास्ट टर्म क्या है? 1. सेकंड लास्ट टर्म है 1. So 1 plus 1 2. तो यहाँ पे चला गया 2. If I say, if I just maybe try to write down this one, right, I'll remove it for sure. So यहाँ पे चला गया 2. अभी I बन गया 3. When I say I is equal to 3, no, उसके पहले we need to swap these two things. अभी क्या है कि यहाँ पे लास्ट टर्म था, दिस वाज योर सेकंड लास्ट टर्म एंड दिस वाज योर लास्ट टर्म. अभी लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? दिस. एंड सेकंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? ये. तो मैंने क्या कर दिया? सेकंड लास्ट टर्म को पहले लास्ट टर्म बना दिया. जो सो सी अभी लास्ट टर्म में वैल्यू था 1, सेकंड लास्ट टर्म में वैल्यू था 1. करेक्ट. और
सीक्वेंस ऑफ आई में वैल्यू है 2। अभी हमको क्या करना है कि इसे लास्ट टर्म बनाना है और इसे सेकंड लास्ट टर्म बनाना है। तो हमको क्या करना चाहिए, पहले सेकंड लास्ट टर्म में लास्ट टर्म को कॉपी करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग, सो दैट अभी क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम हो गया। अभी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म को फिर चेंज करते हैं। लास्ट टर्म में हमको सीक्वेंस ऑफ आई आना चाहिए, सो दैट लास्ट टर्म अभी लेटेस्ट को पॉइंट करे। तो अभी लास्ट टर्म हो गया 2 और सेकंड लास्ट टर्म हो गया 1, करेक्ट। सो when it will come inside this, right, sequence of 3 is going to be what, 2 plus 1 3। so यहाँ पे आ गया 3। अभी अगले हिसाब से क्या होगा, सेकंड लास्ट टर्म विल बिकम 2 एंड लास्ट टर्म विल बिकम 3, सो अगला हो जाएगा 5। दैट्स हाउ इट इज, ओके। एंड इसी तरह से कितने टर्म्स आएंगे, 20 टर्म्स। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग नेक्स्ट। सो यहाँ पे वी आर जस्ट मे बी ट्राइंग टू प्रिंट फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर printf, we are printing that, and then at the same time we are trying to find a sum जो वेरिएबल में 0 पे इनिशियलाइज किया है उसके अंदर हर एक वैल्यू को हम क्या करें, प्लस करें। सम इज इक्वल टू सम प्लस सीक्वेंस है, सो सम प्लस 1, देन 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 plus 8 20, 20 plus 13 33, and so on, correct। And then we are just printing the sum here, okay। Now let's try to execute it. So when we execute, see, the first 20 terms are 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, and so on. These are the 20 terms. And the sum of the first 20 terms of the Fibonacci series is what? 17,710. Okay. So that's how you need to basically deal with the single dimensional arrays. Let's go back to the PPT now. Yeah. So what we have saw, we just saw the following points practically. Array कैसे इनिशियलाइज होता है, एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करने होते हैं, आप एरे के अंदर एलिमेंट इंटर कैसे कर सकते हो, आप एरे के एलिमेंट्स एक्सेस कैसे कर सकते हो, रीड कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट ऑप्शंस ऑपरेशंस ऑन द एरे, दैट्स व्हाट एक्चुअली वी सॉ, okay। Now in the next video we will look at the multi-dimensional arrays. Guys, if you like the video, please share and subscribe to the channel, so that whenever I upload the new videos you will get the notifications, right? I'm gonna cover multiple technologies as a part of this channel, not only C++, Python, Java, and so on, okay। So we'll meet in the next video on the multidimensional arrays. So thank you. As I already mentioned, please do not forget to like, subscribe, and share. Happy learning with the GravityTech. Thank you. Bye.